ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ present tense ਦੇ ਵਿੱਚ we studied that in present tense we just have to conjugate the verb uh, depending on the subject, which is a subject, and then we tend to say whatever we want to say, right? And after that, we studied also that in the present tense we have imperative form. So in the imperative form, we just give orders or just make some requests. So let's say we are sitting in a family setting. I will not say chup me donne silte play, say shows la, just say don't mualim. So it's just precise and it just says whatever I want to say. So we just use the imperative with three subjects. First one is to form, and then is new form, then is woo form. While writing the imperative, we just remove s from the verb conjugation, conjugated verb, and we just write it like that, parle. But there are some exceptions in French always. So what are those exceptions? So when we have le pronom a ou bien y, then we tend to add s. So let's say we have a pronom y, that's to replace the space. Uh, je vais à Paris. Je vais te parler de Paris. So that we tend to replace with the pronom y, and during that case we tend to conserve the s. But other than that, parle, we don't write it with s. For the other verbs, for the other subjects, we just tend to write them as is. Parlons-nous with nous, parlons-nous, parlez-vous. That's it. So that was a quick revision about how to use imperative. So we just try to drop the s, and that's it. We have this with to form and new form and with the woo form. And then the 24 verbs that we have, those are irregular verbs. We have to just cram those imperatives as is. So let's try to see the activity what we have, and then we will discuss in between. So for irregular verbs, it's soit, for être, soyons with new form, and soyez. Avoir, it's I, ayo, aye. Aller is va, allons, allez. So example, je vais à Paris. If somebody says me this, I would say vas-y. So vas-y. So why I wrote here S? Because it's an Y, it's kind of a vowel. So that's why I added S and vas-y. So here I replaced, so Y he is replacing is a pronom complement, which is replacing a pari. So only in that case we have to add S here. Other than that, it's we have to drop the S like it's written here. Va, allons, allez. Mange des légumes. Écoutons cette chanson.
Parlez-vous for. You see here, no subject is involved. But no problem. That was just a base. Now we'll practice some exercises and then we will get to know it better. Bon chance. Spotify. I think it's much easier if you scan the code. Possible for next time. Okay. Good luck. Bon chance. Okay, let's take this example first. Okay, so these are the verbs that are used. First of all, we will try to look at the conjugation that we can do. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, il prend, ils prennent. Same for verb venir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Now that we know that we just use three subjects into it, so we have to just remember these in imperative, these three. Tu form, nous form, and vous form. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. C'est tout. So here, I'm talking to deuxième personne du pluriel. Take your stuff and come to my house. Prends tes affaires et viens chez moi. So see here, the good response is this one. Prends, viens. So here, prends, from here, this one. Prends tes affaires et viens chez moi. So these two. Only in the first category verbs you tend to drop the S, but other than that, it's just to form and new form and who form, same conjugation.
No subject is involved, right? Let's try next one. I think you are the base, right? So you have to take the verb, conjugate it in your head, take the to form or which form is being asked, and then you have to just use that form only without the subject. That's the concept. Okay, let's understand this concept now. So it's asking Wala boulangerie et achète du pain. Okay, so first of all, I will ask the conjugation wise to myself. What's the conjugation of the verb aller and the conjugation of verb acheter? Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Acheter. J'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Since it's the first category, I'll just drop the S here from S and save. So that's how I just do it. Va à la boulangerie and achète du pain. So this is first category. So normally in the first category we tend to drop the S. Any questions? So you ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਲਵਾ ਆਨਸਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚ VA ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਫਾਈਨ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਬਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਾਰਲ ਆਪਾਂ ਐਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈਗੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪੀ ਐਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਾਂਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਯਾ ਲਾਈਕ ਗੋ ਟੂ ਦ ਬ੍ਰੈਡ ਸਟੋਰ ਯਾ ਐਂਡ ਬਾਈ ਦ ਬ੍ਰੈਡ ਇਲ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਸੇ ਸੋਚਿਆ third person exist ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ imperative ਦੇ ਵਿੱਚ so we just give orders to the second person du singulier and first person du plural du plurier et deuxième person du plurier vous ਤੇ nous so ਆ ਤਿੰਨ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸ ਆਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਊਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ बेस आ ही है ये बेस है हमारा तो वर्ब लेना आपने को करना कॉन्जुगेट उसके बाद पूछना अपने आप से उसका ट्रू फॉर्म क्या है ठीक है अगर तो देखो मैं बात कर रहा हूँ वो विल अंडरस्टैंड दैट विद एग्जांपल्स नू कहाँ पे आता है या फिर वो कहाँ पे आएगा पता लग जाएगा आपको वैसे आलोनसी देखते हैं आगे एग्जांपल देखते हैं बट वी विल डू इट अगेन तो मुझे पता है एक थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने किया नहीं अच्छी तरह से तो वी विल डू इट डिटेल नो प्रॉब्लम जस्ट ये लर्निंग हेल्प करते हैं ऐसे ना करते हैं ना हम जैसे
प्रॉब्लम आती है हम हमारे सामने, तो उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं इकट्ठे, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ी लर्निंग फास्ट होती है ऐसे। बट ये बेस आपकी हाँ, जब भी आपका मन हो तो टाइम आपके पास देखो, ये बेस जिसने पढ़ा हुआ है इम्पेरेटिव, हमने किया हुआ पहले। सो जब हमने साउंड करी थी तो उसके साथ करा था। तो इरेगुलर के आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, जैसे एतर का क्या है, स्वा स्वायु स्वाई, अब वार का क्या है, आले का क्या है। तो ठीक है, ऐसे ही लिस्ट है इरेगुलर वाली, तो आपको वो याद करने पड़ेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म क्या है। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ जो हमने करे थे टेंसेस। सो हमने पढ़ा था टेंसेस में 3 तरह के टेंसेस होते हैं। एक तो प्रेजेंट दिल इंडिकेटिव, इसमें हम सिर्फ प्रेजेंट को करते हैं कॉन्जुगेट, राइट। एक होता है इम्पेरेटिव, एक होता है था ने। सब दो, देखो ये तो बहुत इजी है, राइट। तीसरे वाला तो प्रेजेंट हम कर रहे हैं, राइट। और ये आपको हो गया कमांड जिਵੇਂ आज हो गया एग्जैक्टली। जब इसका थोड़ी सी बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। yeah. तो वो कहने को 15 है, लेकिन 15 है नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में 8 ही है जो हम यूज करते हैं वर्ब टेंसेस। तो हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, इम्पेरेटिव की क्या है ये, ठीक है। बाकी फिर पास से है, पास्ट टेंस और फ्यूचर है, चलो वो तो है ही है। तो हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं इम्पेरेटिव की, क्योंकि यूज होते हैं, बाकी यूज नहीं होते टेंसेस 15 ना जो एग्जिस्ट करते हैं पूरे 15, ये जो है ना मेन, ये हम यूज करते हैं इनको। तो सॉरी कल यार ये कश्मीर इंसिडेंट होया तो कोई कोई बंदा कोई जेड़ा खास रूमी। नहीं ऑल नहीं गुड, ऑल गुड, अभी नहीं बैक होम। बट वही है इट्स जस्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है मैं विल टॉक ओके, मैं बंद करा रिकॉर्डिंग कुछ टाइम लिए। या